हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल हम ये देख रहे थे रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। इनफैक्ट कल वाला जो लेक्चर था ये परसों वाले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हमने ये चीजें देखी थी, और आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी इन अ वे अ कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर, क्योंकि इसमें और भी अभी ना कुछ चीजें हैं जो मुझे आपके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो आज हम वही करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम एक तो ये जो कल ये सारी चीजें हमने देखी थी इनको हम फॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, और फिर वो एक इम्पोर्टेंट जो जो इसमें एक इशू है वो जो जिसका मैंने आपसे कल कहा था, द यूनिकनेस इशू, उसे भी आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो चीजें हमने कल करी थी इन्हीं को हम पहले रिकैप्सुलेट करेंगे। देखिए, वी स्टार्टेड विद अ मेट्रिक स्पेस xt, ठीक। Then using this metric space xt, we created another metric space cbxr with sigma. ठीक, where sigma is given by this. Sigma when evaluated at f comma g, where f comma g are coming from cbxr, where cbxr is the collection of all possible continuous bounded real valued functions defined on x. ठीक. Now for f comma g in cbxr, we define it sigma fg like this. It is supremum mod fx minus gx as x varies over capital X. ठीक. Then this sigma, if you define sigma in this way, it defines a metric on CBXR. So CBXR with this metric sigma is a metric space. In fact, it's a complete space. वो मैंने आपके लिए exercise रखी थी. फिर हमने देखा था कि that we can map this x into CBXR, और उसके लिए जो मैपिंग हमने कल डिवाइस करी थी वो ये थी, psi from x into CBXR, and psi works like this. Psi when evaluated at u returns f sub u, और f sub u क्या है, it's a function from x into r defined by this rule, ठीक। और फिर हमने ये भी देखा था कि this psi is an isometry, हमने यहाँ देखा था psi is an isometry, so that means you can isometrically map this x into CBXR, ठीक। CBXR is a complete space, so that means you can map xt, an abstract space, into this space CBXR, ठीक, where CBXR is complete. And chunki CBXR is complete, so therefore this psi of x, the range set of psi, ठीक, this will be, in the first place it will be a subset of CBXR, right. So therefore इसका जो closure है, it will be a closed subset of CBXR. CBXR is complete, this is closed in this, so therefore the associated subspace, the subspace associated with this closure will be complete, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, फिर हमने ना बेसिकली हमने फिर बेसिक आप इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, लेट मी स्टार्ट अ न्यू पेज, वही ये सारी चीजें हम रिकलेक्ट करेंगे एंड फिर हम इन्हें फॉर्मलाइज करेंगे, और वो यूनिकनेस इशू जो इसमें है उसे अभी हम एड्रेस करेंगे।
हमने कल, मैं क्विकली ये चीज़ें सारी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे. If XD is a metric space, comma CB XR be the collection of all possible bounded, comma continuous and real valued functions defined on X and if sigma from CB XR cross CB XR into 0 infinity be defined by this rule: sigma at F, G is supremum of mod Fx minus Gx as X varies over capital X for all F's and G's in CBXR. Then CBXR with this sigma is a complete space. Stuff. Psi from further, वो सारी चीजें ना क्विकली यहाँ रिकैप्सुलेट कर रहा हूँ क्या क्या हमने कल किया था. Psi from X into CBXR defined by this rule: psi at U is F sub U, where F sub U from X into R is defined by this rule: F sub U when evaluated at X returns distance between U comma X minus distance between X comma X naught, where X naught is the fixed point जो हमने इस कैपिटल X में फिक्स किया था. हमने ये देखा था कि this psi is an isometry. Good stuff. Therefore, the complete space, ये ध्यान से देखिएगा. Therefore, the complete space, ये, sorry,
psi x closure with sigma, है ना? It will be a complete space. Why? Because CBXR with sigma is complete and psi x means the range set. देखिए CBXR is the codomain of psi, है ना? CBXR psi का codomain है, तो जो range है psi की, it will be a subset of CBXR. So psi x is a subset of CBXR and therefore psi x closure, it will be closure, is closure in CBXR. चूंकि आप closure ले रहे हैं ना, so this becomes closure also. So this is closure, this is complete. So therefore the associated subspace must be complete. So therefore this is complete. अब मैं यही लिखने जा रहा हूँ. Therefore the complete space this contains a subset. कौन सा subset? This psi x, है ना? A set is contained in its closure. So psi x will be contained in its closure. So this contains a subset, this psi x such that यहाँ दो चीजें हो रही है. पहली चीज, x is isometric to psi x, है या नहीं? Because there is an isometry from x on to psi x. ठीक? So it's isometric to psi x. And the second thing is this, जो psi x है, psi x is dense in कहाँ पर? In this space. It's dense in psi x closure with sigma. Basically with the restriction of sigma to psi x closure. क्या ये सही है? ये तो हमने कल ही देखा था. अब इसे देखिए. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि this is dense in this. अब कब कहते हैं कि a subset is dense in a metric space? If you have a metric space, say Y with some metric, say rho, and suppose A is a subset of Y, then A is said to be dense in this metric space if and only if A closure is Y. Closure should be equal to the underlying set. This is the requirement. अब यहाँ आप किस set की बात कर रहे हैं? Psi x. इसका closure अगर आप लेंगे, it becomes this, which is the underlying set of this metric space. So therefore it is dense in this. So that means we have been able to, rather we have successfully created what? We have created a complete space which contains a subset which is isometric to x, and the subset is dense in the underlying set of the complete space. That means the subset is dense in the complete space. ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए हमारी प्रोग्रेस ये है, we have been able to create a complete space, this, and this complete space contains a subset, और वो subset ये है, and the subset is isometric to x, and the subset is dense in the complete space. ठीक, अब आप एक definition पहले रिकॉर्ड करिए. This is definition. अभी तक हम जो कर रहे थे, हमने मतलब informally तो हमें पता है कि that we are in this, we are pursuing completion.
वी वांट टू कंप्लीट अ मेट्रिक स्पेस, लेकिन हमने कंप्लीशन को भी हमने मैथमेटिकली नहीं देखा, हमने इसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया व्हाट वी मीन बाय कंप्लीशन मैथमेटिकली। तो पहले आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंप्लीशन, मतलब मैथमेटिकली आप कब किस चीज को कहते हैं कंप्लीशन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। completion of a metric space. Let XD be a metric space then a metric space Y with sigma is said to be a completion of the metric space XD. We say this metric space is a completion of XD if and only if we can find या आप क्या लिख सकते हैं, if and only if there exists या we can find an isometry f from x into y such that oh sorry एक मिनट देन ये यहाँ ना एक चीज मैं भूल गया, ये वॉइस सिग्मा जो है ना, ये कोई ऑर्डिनरी स्पेस नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ कंप्लीट स्पेस। आप इसको लिखिए देन अ कंप्लीट स्पेस, then a complete metric space voice sigma is said to be a completion of XD। मुझे लिखना चाहिए था ऊपर। So voice sigma is not an ordinary metric space, it has to be a complete space। Then we say that this y sigma is a completion of XD if and only if we can find an isometry f from x into y such that पहली चीज so basically एक ही requirement है such that fx is dense in y sigma, this is the requirement। आप अच्छे से देखिए इसको। A complete space is said to be a completion of metric space XD if and only if you can find an isometry f from x to y such that the range, देखिए यहाँ आप कह रहे हैं y is codomain of f, और इसकी जो रेंज है it has to be what, it has to be dense in y sigma। अगर आप ऐसा कर सकते हैं then this metric space, this complete metric space is said to be a completion। अगर आप ऊपर आप देखेंगे मैंने बेसिकली आपको दिखाया कि देयर exists a completion, this is existence। हम यहाँ वही कर रहे हैं ना, we have created a complete space, this complete space contains a subset
psi x, which is isometric to x. That means there is an isometry from x into this psi x closure into, मैं कह रहा हूँ, into psi x closure, and the range of the isometry is dense in the metric space, in the complete space. ठीक है ना? तो अभी तक जो हमने किया उसके हिसाब से every metric space has a completion. बस अब देखिए जो definition है, definition of completion is this: a complete space is said to be a completion of xd if and only if we can find an isometry. यहाँ तो आपने ऊपर तो यही किया ना आपने, अगर आप देखेंगे, we created an isometry from x into cbxr. ठीक, अब आप कहेंगे कि आपने हम यहाँ cbxr की जगह ये क्यों ले रहे हैं psi x closure? इसका रीजन ये है because the range has to be dense in the complete space. अगर आप यहाँ psi x को देखेंगे, it need not be dense in cbxr, but it is dense in psi x closure. ठीक, तो ये डेंसनेस अचीव करने के लिए हमने फिर इसको खाली यहाँ ये ना ये psi x closure को कंसिडरेशन में लिया था. हमने पूरा cbxr नहीं लिया, हमने खाली, एंड बेसिकली यहाँ आप क्या करें, यू आर कंप्लीटिंग x इन एन इकोनॉमिकल वे. आप कोई अननेसेसरी पॉइंट अटैच नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल, you know that this is not complete, है ना? This is not complete. Now the most economical way of completing this is to attach only 0 and 1. देखिए अगर आप इसे देखेंगे, -1 to 1, this is a complete space, right? और आप देख सकते हैं कि as if this has been obtained from this by attaching which points? By attaching these points: -1 to 0 union singleton 1. अगर आप इस सेट को ये पॉइंट्स अटैच करते हैं, it becomes this set, and this set together with the restriction of this modulus to this, it becomes a metric space, a complete space, because it's closed. तो यहाँ भी in a way आप complete कर रहे हैं इस metric space को, but this is not completion because आप यहाँ unnecessary points भी, मतलब you are not economical in this. जो आप ये points attach कर रहे हैं ना, इसमें आप कुछ ऐसे भी points attach कर रहे हैं. For example, -1. Actually, the same can be obtained by attaching only 0 and 1. अगर आप खाली 0 और 1 ही attach इसमें करेंगे ना, you'll get something which is complete. So you have to, मतलब basically ये जो है ना, ये वाली requirement, fx is dense, and basically it tells us that this y, it contains no unnecessary points, no points other than those which are required for completing x. डेंसनेस असल में उसी चीज को यहाँ एड्रेस कर रही है. अब फिलहाल के लिए अगर आप ये डेफिनेशन और ये जो ऊपर हमने किया, अगर आप ये दो चीजों को simultaneously देखेंगे, then you can conclude that every metric space has a completion, because ऊपर आप precisely यही कर रहे हैं. You have found a complete space which contains an isometric copy of x, and the isometric copy of x जो इसके अंदर है, that copy is dense in the underlying set of this complete space. So every metric space has a completion. The existence is not an issue. अब question है, what about uniqueness? क्या एक से ज़्यादा completions हो सकते हैं? The answer is no. और यही हम अब देखेंगे. मैं आपको दिखाऊंगा. If basically मैं आपको दिखाऊंगा कि the completion is unique. Existence already हो गया. अब हम खाली uniqueness पर अपना attention focus करेंगे. ठीक है? Uniqueness, इसको आप heading में लिखेंगे. Uniqueness
of completion of a metric space. ठीक, अब यहाँ यूनिकनेस के लिए हमने एक रिजल्ट चाहिए, वो मैं पहले आपके लिए स्टेट कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। इफ इसको आप एज थियरम नोट करेंगे। इफ ये अपने आप में भी है ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ एक्स डी be a metric space and y sigma be a complete space, इसको ऐसे लिखिए आप। if यहाँ से काटिए, यहाँ आप लिखिए let xd be a metric space and y sigma be a complete space, full stop. If a is a subset of x and if f from a into y is uniformly continuous, अगर ऐसा है, then this f has a unique extension g, और ये g कहाँ से कहाँ जाएगा? From a closure into y. बेसिकली अगर आप इसको पिक्टोरियली देखेंगे, सपोज दिस इज x, ये मान लीजिए दिस इज y, और यहाँ x में जो डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है वो d है, वेयर जो y है वहाँ जो डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है वो सिग्मा है। उसके बाद क्या है, आप क्या इस थियरम में क्या और क्या है यहाँ पर, we have a subset A and we have a function defined on A, so that means A has to be non-empty, ठीक, so it's implicit. I have a non-empty subset A, ठीक, this is A and we have a function which takes this A and maps it into y. ठीक, the theorem says if y is a complete space and if this f is uniformly continuous, then this f has a unique extension g from a closer to y. That means you can extend the definition of this. देखिए this function is defined f ना, it's defined on a. अब a में इसके boundary points हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. The theorem says you can extend the definition of function f to the boundary points as well. That means you can include the boundary points these boundary points you can basically extend the definition of f to the boundary. So वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ, then this f has a unique extension g from a closer to y. Oh sorry, यहाँ एक important चीज है, such that, तब जाके ना ये unique आएगा, such that g is uniformly continuous. तो
बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये फंक्शन जो f है आपका डिफाइंड ओनली ऑन a, आप इसको a की बाउंड्री पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं while maintaining its uniform continuity. f has an extension g and g is uniformly continuous. So uniform continuity जो f में है, it's being maintained or it's being preserved in the process of this extension. ये आप देख लीजिएगा, इसका प्रूफ मेरे एक वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से वो आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ है वो। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड मेट्रिक स्पेसेस एंड एक्सटेंडिंग यूनिफॉर्म का, तो मुझे कल आप बता, इसको आप एक दफा देख लीजिएगा। इस थ्योरम के लिए आपको ये वीडियो लेक्चर है, यहाँ आप इसे आप एक दफा इसे देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको ये ना इसकी पूरी जस्टिफिकेशन मिलेगी कि ये कैसे होता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे इन दिस यूनिकनेस डिस्कशन। अब आप क्या करिए, लेट्स सपोज ऐसे लिखिए, इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, suppose a metric space xd has two completions, say y1 with sigma 1 and y2 with sigma 2। मान लीजिए इसके दो completions हैं, this and this। So by definition ये क्या होंगे, y1 sigma 1 and y2 sigma 2। y sigma is a completion if y sigma is complete, there is an isometry from f, there is an isometry f from x into y such that fx is dense in y sigma, ठीक। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंप्लीशन। अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों कंप्लीशन है, तो फिर क्या होगा, देन जो पहली चीज है वो ये होगी, y1 sigma 1 and y2 sigma 2, they must be complete spaces, ठीक। दूसरी चीज, we can find isometries, basically two isometries, find two isometries, one which goes from x into y1 and दूसरी जिसको हम g से यहाँ एड्रेस करेंगे, g which goes from x into y2 such that the range of f, this is dense, कहाँ होगी dense, in the metric space y1 sigma 1 and the range of g
isometry G, this will be dense in y2 sigma 2. लेट्स ड्रा पिक्चर फॉर दिस, उससे थोड़ा हमें जहन में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर. Suppose this is your metric space xt. अब मान रहे हैं कि इसके दो कंप्लीशंस हैं, y1 sigma 1 and y2 sigma 2. Let's suppose this is y1 sigma 1 और ये मान लीजिए this is y2 sigma 2. So this is y1 with sigma 1 और ये मान लीजिए this is y2 with sigma 2. These are both what? These are complete spaces. ठीक, and we have what? We have two functions f and g. f कहाँ से कहाँ जा रहा है? f goes from x to y1. So we have a function f which takes this x into y1. और y1 के अंदर कहाँ जाएगा? It will go actually on its range. और मान लीजिए this is the range of this. This is its range. We have a function f which takes this x into its range in, और वो range कहाँ होगी? In y1. इसी तरह we have a function g which takes this x into what? Into its range, rather on its range. Or suppose this is the range of, this is your g at gx, the range of g. और ये कोई ordinary functions नहीं है, these are isometries. This f is an isometry. Same is the case with this g. This is also an isometry. That means they preserve distances. ठीक, और ये fx और gx जो है, they are dense. This fx is dense in y1. This gx is dense in y2 with sigma 2. ठीक, अब सबसे पहली चीज जो आप यहाँ देखेंगे वो ये है, observe that ये ध्यान से देखिएगा, f inverse from the range set. क्योंकि आपको पता है कि f from x into fx, this is a bijection. Why? Because it's an isometry. ठीक, so it's injective, और चूंकि range आप ले रहे हैं कोडोमेन की जगह, तो it becomes surjective automatically. So it's a bijection, so it's invertible. इसका जो inverse है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? It will go from fx into x. ठीक, this from this to this is an isometry. क्यों है ये isometry? Because inverse of an invertible isometry is an isometry. So it's an isometry. ठीक, now एक और चीज, you have a function g which takes x into gx, right? जो f inverse है, इसका जो कोडोमेन है, it's x, and x is the domain of g. So that means you can follow the action of f inverse by g. ठीक, you can follow this by g. Further, अगर आप इसे देखेंगे, g composed with this f inverse,
ये कहां से कहां जाएगी ये मैपिंग? F inverse क्या करेगा? It will take fx into x and then g will take x into gx. So that means it will be a mapping from fx into where? Into gx. And gx कहाँ पर है? It's contained in y2. ठीक? So therefore या आप ऐसे लिखिए, further this from this to this which is contained in this is an isometry. ये मुझे बताइए कैसे है ये isometry? What is the reason? It's composition of G and F inverse. G और F inverse दोनों isometries हैं and composition of two isometries is an isometry. इसका reason असल में वही है because composition of two isometries is an isometry. So it's an isometry, this function. Isometries are uniformly continuous, so therefore it's uniformly continuous also. ठीक? What's y2? y2 is a complete space. So that means you have a uniformly continuous mapping going from fx into gx. The mapping is actually this. It is f inverse composed with, oh sorry, G composite with F inverse. We are following the action of F inverse by G. ठीक, we'll get it. So क्या मिल रही है आपको यहाँ पर? अब we have a mapping from a subset this which lives in y1 sigma 1 and it takes values in y2 sigma 2. y2 sigma 2 actually it takes values in gx, but gx is a part of y2 sigma 2 and y2 sigma 2 is a complete space. So that means you have a uniformly continuous function this, because it's an isometry. Isometries are uniformly continuous function. Isometries are uniformly continuous functions, right? So you have a uniformly continuous function which takes values in this complete space. अब आप यहाँ क्या करेंगे? आप वो ऊपर वाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. वो आपसे कह रही है कि that if you have, whenever you are in this type of scenario where you have a uniformly continuous function defined on a subset A and taking values in a complete space, then you can extend that uniformly continuous function to the boundary as well. That means basically you can include the, जब आप A closure की बात करते हैं ना, because A closure is actually A union boundary A. So अब कौन से नए points आ रहे हैं? Possibly the boundary points. So you can extend the definition to the boundary as well. ठीक, या आप कह सकते हैं you can extend the function from A to its closure. ठीक है ना? And during this extension the uniform continuity will be maintained, and there is one and only one way of doing this because it has and it's unique. So there is one and only one way of doing this. अब जब आप इसका इस्तेमाल नीचे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि ये जो GOF इनवर्स है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं to the closure of fx. But what is the closure of fx? You know that fx is dense in y sigma 1. So closure is of fx is y1. है या नहीं? मैं यही लिखने जा रहा हूँ. This is an isometry और इसका रीजन ये है because composition of two isometries is an isometry. Consequently, GOF inverse is a uniformly
continuous map because isometries are uniformly continuous defined on, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है fx and taking values. ये values कहाँ लेता है? Values in y2, right? Actually it takes values in, जैसे कि मैंने आपसे कहा, it takes values in gx, but gx is a part of y2. So it takes values in y2. Full stop. Now since y2 sigma 2 is a complete space, it follows this GOF inverse has a unique uniformly continuous extension because extension के दौरान uniform continuity is preserved or maintained, has a unique uniformly continuous extension. Let's suppose the extension is h. ऐसे लिखे, has a unique uniformly continuous extension h, और ये h कहाँ से कहाँ जाएगा? It will be from the closure of the, इसका जो domain होगा h का, it will be the closure of the domain of this GOF inverse. The domain of GOF inverse is fx, or fx closure is y1 because fx is dense in, इसका domain ये होगा fx closure, but fx closure जो है ना, it's equal to y1, और इसका reason ये है because fx is dense in because it's dense in y1 sigma 1. So this is y1, or it will take values in कहाँ पर? in y2. तो ये होगा this mapping जो हमने ऊपर जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसको आप बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं to the whole of y1, इस पूरे y1 पर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. So it has an extension, a unique extension, and the extension will be uniformly continuous. That's very important. ठीक है, full stop. अब मेरा एक claim है. We claim that this h, which basically is the extension of this GOF inverse. My claim is that this h is an isometry. आप याद करिए, ये जो GOF इनवर्स है ना, ये भी एक आइसोमेट्री ही है. अब यहाँ लिखा है इनफैक्ट हमने ये, दिस इज एन आइसोमेट्री, और जो इसका एक्सटेंशन है, मेरा क्लेम है कि वो भी आइसोमेट्री ही होगी. दिस इज माय फर्स्ट क्लेम दैट इट इज एन आइसोमेट्री. पहले हम इसी को देखेंगे. So to see this, let u, v, v2 पॉइंट्स कहाँ पर? in its domain, और इसका domain क्या है? it's y1. So let these be 2 points in y1. ठीक है. But what is y1? y1 is fx closure because fx is dense in y1. Then अब आप कह रहे हैं कि u and v, they are closure points of fx. So क्या होगा फिर? Then we can find, क्योंकि हमें पता है कि closure points are basically limits of convergent sequences. So u and v must be
limits of two convergent sequences in this fx. So we can find un and running from 1 to infinity in fx. In fact, दोनों को साथ में लिखेंगे. We can find un and can find sequences un and running from 1 to infinity and vn and running from 1 to infinity in kaha in fx such that uns converge to u and vns converge to v. ये होगा as n goes to infinity. ठीक है. Now h of u comma v, sorry, h takes values where? It takes values in this space. H is the extension of this function. This function takes values in this y2 sigma 2. So h takes values in y2 sigma 2. और वहाँ जो डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है सिग्मा 2, तो हम क्या करेंगे? विल मेजर द डिस्टेंस बिटवीन h वैल्यूज. और ये करने के लिए वी हैव टू यूज सिग्मा 2 बिकॉज h टेक्स वैल्यूज इन y2 एंड y2 में डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है सिग्मा 2. So we are taking this sigma 2 of h at u comma h at v. This is equal sigma 2 of, चूंकि मुझे पता है कि u is limit of uns, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h of limit n goes to infinity un then comma h of v को ऐसे लिखा जा सकता है h of limit n goes to infinity vn. ठीक है ना? Now we also know that h is uniformly continuous, so you can take this limit outside h. So this is same as sigma 2 of limit n goes to infinity h of un, ठीक, and comma limit n goes to infinity h of vn. इसका रीजन सिंपली ये है कि बिकॉज h is uniformly continuous and therefore continuous. कंटिन्यूस मैपिंग्स में आप ये कर सकते हैं. ठीक. अब परसों भी मैंने आपको दिखाया था कि लिमिट में मेट्रिक के केस में भी आप ये लिमिट्स को बाहर निकाल सकते हैं. तो चूंकि metric is also continuous, so therefore this is same as limit n goes to infinity. ये हमने परसों किया है, आप देखिएगा. sigma 2 of, या ऐसे लिखिए इसको, n goes to infinity sigma 2 of h at un comma h at vn. ठीक है. Now ये un और vn जो है they are points in, because they are sequences in fx, and h is an extension of what? It's an extension of go in f inverse from fx to fx closure, है ना? h इसका extension है, so that means इसका बेसिकली यहाँ मैं ये रीजन, इसका जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसका रीजन ये है, h is an extension of go f inverse from fx to
fx closure. Basically this h it extends this function from this to this, the bigger set. अब चूंकि ये जो है uns and vns जो है they are coming from fx, तो fx के लिए h and gof inverse they will be same. This and this they are same in fx, right? Because this function actually extends this function from this to this. So as far as this is concerned, this and this they are same. So यहाँ पर h is same as gof inverse. So limit आप ऐसे ही रखेंगे n goes to infinity sigma 2. अब यहाँ this is h un, इसको आप लिख सकते हैं gof inverse at un, then gof inverse at vn. ठीक, फिर से लिमिट ऐसे ही रहेगी n goes to infinity. Now what हमें ये पता है कि gof inverse जो है it's an isometry, so that means the distance between these two gof inverse values will be actually the distance between the points. So therefore this is actually sigma 1 of un comma vn. अब आप क्या करेंगे, अब जिस तरह से आपने ये लिमिट को बाहर निकाला था ना, इसको इसी तरह से आप इसको अंदर भी ले सकते हैं. So this is same as, because metric is a continuous map, so this is same as sigma 1 of ये लिमिट अब अंदर जाएगी. So this will be limit n goes to infinity un, then limit n goes to infinity vn, and we know that limit n goes to infinity un is u, limit n goes to infinity vn is v, so this is sigma 1 of u comma v. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो पॉइंट्स देते हैं कहां पर, इन y1, और फिर उन दो पॉइंट्स पर अगर आप h अप्लाई करते हैं, जो वो h वैल्यूज है उनके भी दरमियान जो डिस्टेंस होगी इट विल बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स u and v. So that means h is an isometry. Hence h is an isometry. Now isometries are injective and uniformly continuous, so this h is also uniformly continuous and it is one to one. ठीक, अब इसके बाद my next claim. Next we claim that this h is 1 तो होगा ये, because it's an isometry. मेरा claim ये है कि it's surjective also. This is non-trivial. आपको इसके लिए आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी होगी, तब जाके आप देख सकते हैं कि that this h is indeed surjective. और सब्जेक्ट सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको, आपने एक पॉइंट पिक करना है. कहाँ, इन y2 sigma 2. Let's suppose you pick a point zeta. Also, full stop. To see this, let zeta in y2 be arbitrary. Then, in view of the fact that gx closure जो है, क्योंकि gx is dense in y2, so gx closure is y2, और zeta आप y2 से ले रहा है, so that means zeta basically आप यहाँ से ले रहा है, so zeta belongs to this. ठीक है ना, तो zeta basically इस क्लोजर से आ रहा है, और क्लोजर से आने का मतलब है कि इट्स अ क्लोजर पॉइंट. अगर ये क्लोजर पॉइंट है, so that means there must be a sequence. It follows we can find a sequence, and let's suppose the sequence is this: an running from 1 to infinity. कहाँ होगी ये sequence? It will be in gx, such that these ans
will converge to zeta. ठीक, अब कह रहे हैं कि this is a sequence in gx, but gx what it is the range of g. ठीक, इसमें असल में g values रहते हैं. अब अगर आप कहते हैं कि this is a sequence in gx, so that means these ans are actually g values. ठीक, तो that means in ans की pre-images होंगी as far as g is concerned. They must have pre-image under g. और चूंकि g is isometry and so therefore 1 1, तो वो pre-images unique भी होंगी. तो इन ans की क्या होंगी basically unique pre-images. और वो कहाँ होंगी वो pre-images? ये आप पिक्चर को देखिए, ans आप यहाँ से ले रहे हैं, चूंकि ये इसमें g वैल्यूज रहता है, तो इस an की एक pre-image होगी यहाँ x में, और वो यूनिक होगी. why? Because g is an isometry, so therefore it's 1 to 1. ठीक, let's assume that the pre-image of an under g is bn. तो मैं यही अब नीचे लिखने जा रहा हूँ. Consequently, we can find bn's in x such that g of bn will be equal to an. ठीक, so basically these bn's are, अगर आप देखेंगे, these bn's are basically g inverse of ans. ठीक है ना? Now observe that this sequence of bn's and from 1 to infinity, this is a Cauchy sequence in xt. बताइए कैसे? इसका एक plain reason है. ans are convergent to zeta, so that means this sequence is convergent. अगर ये convergent है, so it's a Cauchy sequence. ठीक, so that means अगर ये Cauchy sequence है, इसका ये भी मतलब है कि फिर ये sequence जो है g inverse an from 1 to infinity, ये भी Cauchy sequence ही होगी. बताइए क्यों? Because g inverse is an isometry. Isometries distance is disturb नहीं करती है. तो अगर आप Cauchy sequence पर एक Cauchy sequence की हर एक टर्म पर अगर आप एक आइसोमेट्री इवैल्यूएट करेंगे, जो रिटर्न में जो आउटपुट में जो सीक्वेंस आपको मिलेगी, वो भी एक Cauchy sequence ही होगी. Image of a Cauchy sequence under an isometry is a Cauchy. In fact, image of a Cauchy sequence under a uniformly continuous map is again a Cauchy sequence. ये ज्यादा जनरल है, बट यहाँ आपको उतना ज्यादा जनरलिटी यूज करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि चूंकि G इज एन आइसोमेट्री, सो G इनवर्स मस्ट बी एन आइसोमेट्री, और आइसोमेट्री जो है दे टेक Cauchy sequences to Cauchy sequences. So it's a Cauchy sequence in XD. Now we have another function f which takes x into fx, right? That means into y, because fx is a part of not y, y1. We have a function f which takes x into y1, right? Now this sequence is, और ये जो function f है ना, ये भी एक आइसोमेट्री ही है. ठीक, so that means अब ये जो sequence आप नीचे देख रहे हैं, इसकी जो image होगी वो भी एक Cauchy sequence ही होगी. This is a Cauchy sequence in XD, and since f from x into fx, where fx is a part of y1, is an isometry, it follows
it follows f of bn and running from 1 to infinity this is a Cauchy sequence in y sigma 1 y1 sigma 1 ठीक because takes values in fx and fx is a part of y1 so therefore it's a sequence in y1 sigma 1 आप इसको देख सकते हैं और ये Cauchy sequence होगी because f is an isometric और ओरिजिनल सीक्वेंस जो है x bns की वो भी नहीं एक मिनट ये शायद सही नहीं हो रहा है ये गलत हो रहा है यहाँ पर इसको करेक्ट करें आप we can find bn's in x such that g of bn is an फिर हमें ये नहीं लिखना है observe that g of bn basically यहाँ bn's g of bn तो अगर आप देखेंगे वो तो वापस an से आएंगे ना तो these are not g of bn's these are bn's तो bn's की जो सीक्वेंस है this is a Cauchy sequence in xt और चूंकि f from x into y1 is isometric तो फिर ये फॉलो होगा अब ठीक हो रहा है ये गलती से हुआ था ये यहाँ g of bn नहीं होना चाहिए था it should have been bn a sequence of bn's is Cauchy in xt और चूंकि f isometry है तो it's Cauchy in y1 sigma 1 अब ये जो y1 sigma 1 है अगर आप ऊपर देखेंगे it's a complete space तो अगर ये complete space है और वो Cauchy है वहां पर so it must be convergent since y1 sigma 1 is a complete space it follows we can find a y in y1 such that limit n goes to infinity f of bn this will be y क्योंकि ये Cauchy है यहाँ पर ये complete है तो ये convergent होनी चाहिए so you must be able to find a y in y1 such that this thing happens ठीक now अब इसी y पर अगर आप h अप्लाई करेंगे so if you apply h to this y क्या मिलेगा आपको in the first place क्योंकि y is limit so therefore it will be h of limit ठीक और चूंकि हमें ये भी देखा है ऊपर कि that h is uniformly continuous so ये लिमिट आप h के बाहर निकाल सकते हैं so therefore it is limit n goes to infinity h of f of bn अब आप h की डेफिनेशन देखिए व्हाट्स h कहाँ गया h is extension of GOF inverse ठीक है ना so that means as और कहाँ से कहाँ है इसका extension from fx to fx closure basically हमें फिर से इस observation का इस्तेमाल करना है हमने already ये देखा है ना कि h and g inverse h and GOF inverse ये जो दो functions हैं they agree in fx so that means as far as f values are concerned this and this they return the same value अगर आप h को evaluate करेंगे at some f value और अगर आप इसे evaluate करेंगे at some f value you'll get the same answer ठीक है ना अब नीचे अगर आप देख रहे हैं आप h को कहाँ पर evaluate कर रहे हैं at f of bn so it's an f value so यहाँ आपका h और GOF inverse आपको एक ही value देगा so this is same as limit n goes to infinity basically h को यहाँ आप
रिप्लेस कर सकते हैं बाय GOF इनवर्स, राइट। तो अगर आप ऐसा करेंगे आपको क्या मिलेगा, लिमिट ऐसी ही रहेगी, h की जगह ये आएगा, सो दिस विल बी GOF इनवर्स इवैल्यूएटेड एट f of b of n। दिस इज सेम एज आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने bn पर f अप्लाई करना है, फिर उसके बाद f इनवर्स अप्लाई करना है। जब आप ऐसा करेंगे f और f इनवर्स ये एक दूसरे का एक्शन कैंसिल करेंगे ना, बिकॉज जो f bn में चेंज लाएगा f इनवर्स उसको कैंसिल करेगा। सो इट विल बी सेम एज लिमिट n goes to infinity g of bn। and what is g of bn? g of bn is an। हाँ, ऊपर हमने लिख के रखा है, g of bn is an, right? So this is limit n goes to infinity an। and what is limit n goes to infinity an? It's zeta। तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो zeta हमने ऊपर ऐसे ही आर्बिट्रली लिया था ना, zeta कहाँ से आपने लिया था, y2 से, और कैसे लिया था, आर्बिट्रली लिया था। और पिक्चर आप देखिए, zeta हमने ये y2 से लिया था, और नीचे क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि this zeta is what, it is equal to h of something। और ये जिस चीज का ये h है, basically it is h of y। ये y कहाँ से आ रहा है, y is in y1। so basically आप कह रहे हैं कि corresponding आप कह रहे हैं कि corresponding to this zeta जो आपने यहाँ y2 से लिया था, there is a y in y1 such that h takes this y to zeta। so that means चूंकि zeta arbitrarily लिया था हमने, और अगर zeta की प्री इमेज है y, so it then means every point in y2 has a pre image under h, so that means h is surjective। hence h is a surjection। ये ऑलरेडी आइसोमेट्री हमने एस्टैब्लिश किया है, सो इट्स ऑलरेडी एन a 1-1 मैप। अब ये सर्जेक्शन भी है, so that means it's a bijection। so that means this h from y1 into y2, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, is a bijection, और ये आइसोमेट्री भी है, एंड आइसोमेट्री। ठीक, सो दैट मीन्स जब आप कहते हैं बाइजेक्शन है, तो दैट मीन्स दिस सेट एंड दिस सेट इनकी कार्डिनलिटी सेम होंगी। और जब आप कहते हैं आइसोमेट्री है, इट मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है और यहाँ जो डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है, एसेंशियली वो सेम होगा, इन अ वे वो सेम होगा, बिकॉज सिग्मा 2 of h at u comma h at v, this is equal to sigma 1 of u comma v। और जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था, इनवर्स ऑफ एन आइसोमेट्री, इनफैक्ट आज भी हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया यहाँ पर, इनवर्स ऑफ एन आइसोमेट्री इज आइसोमेट्री and isometries are continuous, so that means h is a bijection, it's continuous because it's an isometry। और इसका जो इनवर्स है, चूंकि वो भी एक आइसोमेट्री होगा, तो वो भी continuous होगा, so that means h becomes a homeomorphism। so that means this y1 sigma 1 is actually homeomorphic to, in fact isometrically homeomorphic to y2 sigma 2। so that means ये असल में एक ही स्पेस है, टोपोलॉजिकली इनमें कोई फर्क नहीं है। so that means this and this topologically are same, so that means completion is unique। ठीक, अब हमने ऑलरेडी ऊपर एक completion हासिल किया है, और नीचे आप देख रहे हैं completion is unique, so that means this is actually the only completion of xt। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं Sykes closure with sigma, this is the only completion of xt, because जो भी दूसरा completion होगा टोपोलॉजिकली वो असल में यही होगा।
इसका रीजन ये नीचे हमने अब देखा। अगर आप कोई और कंप्लीशन भी लेंगे, वो कंप्लीशन और जो आपका पहला वाला कंप्लीशन होगा, दे विल बी बेसिकली होम्योमॉर्फिक, एक्चुअली आइसोमेट्रिकली होम्योमॉर्फिक। देयर विल बी एन आइसोमेट्री acting between them, a bijective isometry acting between them. So topologically वो same होंगे, so that means uniqueness. The completion of a metric space exists and it is unique. और इसके लिए एक constructive procedure है, आपको कल मैंने वो दिखाया था, उसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं completion। अब इसके साथ ये पूरा ना कंप्लीट हो रहा है, अब इसमें और कुछ नहीं है। अब हमने इसको पूरी ना इनसाइड आउट हमने इसको देख लिया, इस चीज को, कंप्लीशन को। पहले मैंने आपको दिखाया कि यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट स्पेस विच कंटेन्स अ डेंस सेट विच इज आइसोमेट्रिक टू योर मेट्रिक स्पेस X3। और फिर यहाँ नीचे हमने देखा कि अगर कोई और भी ऐसी स्पेस होगी या कोई और भी ऐसी कंप्लीट स्पेस अगर होगी, वो बेसिकली इसको होम्योमॉर्फिक होनी चाहिए। से आप देख लीजिएगा, ये इसके साथ ही ना ये आपका ये कंप्लीशन का ये जो कंप्लीशन रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसके साथ ही खत्म हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका PDF भी फॉरवर्ड करूंगा, ये जो हमने किया ना, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये, कोई इसमें बहुत सारा काम करना है। इनफैक्ट कुछ चीजें मैंने आपके लिए भी रखी थी, वो CDXR इज अ कंप्लीट स्पेस, आई होप आपने वो किया होगा। इन एनी केस मैं आपको इसके लिए एक PDF फॉरवर्ड करूंगा, वहां से भी आपको ये सारा फिर मटेरियल मिलेगा, और वीडियो लेक्चर्स में तो है ही। चलिए ठीक है, फिर आप जा सकते हैं।